Hello friends, today we will discuss some basic facts about the radioactivity. Now as we know that every substance in the universe is made by the atom, and atom consists proton, electron and neutron. Neutron and proton consist by the nucleus. Now how do we represent atoms of different elements? And the symbol of the represent the atom of the any elements is X is represent the name of the element, Z is the atomic number, A is the mass number. As shown in this slide, hydrogen 1h1, 1h2, 1h3 showing isotopes of hydrogen atom, and 92U235 is the natural isotope, and 92U233 is the man-made isotope, and same plutonium is also a man-made isotope. These are represent only representation of the isotopes. Now radioactivity. Radioactivity is two type: artificial or natural, or spontaneous or artificial. Spontaneous radioactivity, the process of spontaneous emission of radiation by unstable nucleus is called spontaneous radioactivity. Means radioactivity occur spontaneously, that is called spontaneous radioactivity. If we are doing some forcefully or some experiment through, for example in nuclear reactor, this is the that is called artificial radioactivity. Now alpha particle radiation, when the radioactivities occur, then three types of particle is coming: alpha, beta and gamma. First is alpha particle. When alpha particle coming from the parent nuclei, as it's shown in figure, this is the parent nuclei and this is the daughter nuclei, and the alpha particle is consist two proton and two neutron. Okay, and if that alpha particle is always coming from the those elements having Z is greater than 90, because those elements are unstable as comparison to less than 90 Z number on those elements having Z is less than 90. Now beta particles. Beta particles is just a fast moving electron that comes from the nucleus, and when beta particle is coming from the parent nuclei, then one antineutrino is coming. If beta negative particle is coming, then antineutrino is emit, and otherwise beta positive particle is emit, then neutrino will emit. And at that time Z number is depend upon the +1 or -1, depend upon the beta negative or beta positive particle is coming. Now gamma radiation is the photon that is the packet of energy, just unstable nuclei come in the ground state and emit the extra radiation, extra energy, that is called gamma radiation. That is always come from the nucleus, and as we know that X-ray and gamma ray is ionizing radiation, and X-ray is always emit from the transition from the electronic level, and gamma rays is always coming from the nucleus, in that is coming from the nucleus states, means transition in nuclear level. Now penetrating power of the radiation. The penetrating power of the radiation: alpha particle can be stopped by the paper, beta particle can be stopped by plastic sheet, gamma and X-ray cannot be stopped by anything, but lead, the lead can stop, mean that element can stop, means some fraction, not 100% we can stop by the any material. It's depend upon the thickness and other things. So we can say that gamma ray and X-ray having range is infinity. High energy ionization radiation means those radiation can ionize the elements, means if we are saying for our human body, the alpha particle, beta particle, X-ray, gamma and neutrons can be ionize our body, and low and non-ionizing radiation means radio wave, microwave, light, heat wave cannot ionize our body. So we can say that the mobile radiation cannot create cancer because the non-ionizing radiation. So
This is the reason known because the energy is lesser than the for ionization. Now, what is ionization? What is ionization means when electron removed from the atoms, that is called ionizing of the atoms. Now we can detect the any radiation by scintillation process, or scintillation mean when that radiation is interact with the any material and produce the scintillation mean invisible radiation. Ion pair means, for example, if we are that radiation is passing through the gas and that gas is converted into ion pair mean positive and negative, that can be detected by the electrode, so we can say that strength of the radiation. Now photographic film also we can measure, and also we can measure that radiation by effect on human beings means the damage, amount of damage in human body, that is also can be measured by the that that ionizing radiation strength. Now, radiation alpha beta gamma energetic interact with the matter to deposit the energy. when जब भी इलेक्ट्रॉन, जब भी ये एनर्जी किसी मैटर में से पास होगी तो उसमें वो एनर्जी डिपॉजिट करेगी आयनाइजेशन प्रोसेस या जो दूसरे भी प्रोसेस होते हैं, बिकॉज गामा रेडिएशन इज प्रोड्यूस, गामा रेडिएशन 3 टाइप का इंट्रैक्शन करती है, पेयर प्रोडक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक, कॉम्पटन। इसी तरह अल्फा और बीटा भी अपनी एनर्जी डिपॉजिट करेंगे। द मेटेरियल में एल्टर एंड इट्स प्रॉपर्टीज में चेंज, मटेरियल में कुछ चेंज आएगा, उसकी प्रॉपर्टी में चेंज आएगा, उसके अकॉर्डिंग हम स्ट्रेंथ ऑफ द रेडिएशन मेजर कर सकते हैं। रेडिएशन विल अटेनुएट आफ्टर इंटरेक्टिंग विद द मटेरियल, मीन जी कितना रेडिएशन उसके अंदर अटेनुएट हुआ है, नंबर ऑफ रेडिएशन जो हमने फॉल किया इंसिडेंट और कितना उससे कम बाहर निकला है, उससे भी हम उसको चेक कर सकते हैं कि कितना एनर्जी डिपॉजिट हुआ है। नाउ सोर्सेज ऑफ रेडियो एक्टिविटी, पेरीमोर्डियल फ्रॉम बिफोर द क्रिएशन ऑफ द अर्थ, ये जो एलिमेंट होते हैं ये अर्थ के क्रिएशन होने से पहले के एलिमेंट्स बने, मतलब बिग बैंग के टाइम में बने हो, उन्हीं एलिमेंट से जो हमें रेडिएशन मिल रहा है वो पेरीमोर्डियल एलिमेंट्स कहेंगे। फिर है कॉस्मोजेनिक, फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ कॉस्मिक रे इंटरेक्शन, कॉस्मिक रे का इंटरेक्शन आउटर सरफेस पे होता है और उसके थ्रू हमें ये अल्फा बीटा गामा ये रेडिएशन हमें हमारे अर्थ के सरफेस तक आती है, उसके थ्रू भी हमें मिलता है। ह्यूमन प्रोड्यूस मीन रिएक्टर के थ्रू, या हमारी जो बॉम्ब या दूसरी टाइप की एक्टिविटी होती है उससे भी हमें रेडियो एक्टिविटी जो है वो हमारे आसपास नेचर में एग्जिस्ट करती है, मतलब अल्फा बीटा गामा हमें मिलती है। नाउ जो हमें एनुअल डोज मिलती है, एनुअल डोज जो ऑल ओवर वर्ल्ड का जो एवरेज है वो 2.4 मिली सीवर्ट पर ईयर है, मीन हम डोज को मेजर करते हैं सीवर्ट में। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे, सीवर्ट के बारे में बताएंगे। मीन्स ये जस्ट ये यू कह सकते हैं किसी चीज़ को मेजर करने का है कि हमारी बॉडी में कितना एनर्जी डिपॉजिट होता है, उसको मेजर करने का एक ये यूनिट है। तो 2.4 मिली सीवर्ट पर ईयर हर एक पर्सन को एवरेज वर्ल्ड वाइड मिलता है, किसी कंट्री में कम है, किसी कंट्री में ज़्यादा है। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो हमारा जो प्लेस है वो केरला में है, वो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। कॉस्मिक रेज का जो कंट्रीब्यूशन है 2.4 मिली सीवर्ट पर ईयर में 0.4 है। टेरेस्ट्रियल गामा रेज मीन जो हमारे यूनिवर्स से आती है उसका जो डोज मिलता है हमें 0.5 है। इंटरनल रेडिएशन मीन जो हमने अंदर जो हमने खाते हैं जैसे केला या इन सब में K40 होता है, या जो भी मिल्क वगैरह खाते हैं नेचुरल जो हम सब्सटेंस ले रहे हैं तो उसमें भी नेचुरल आइसोटोप्स होते हैं, उनकी वजह से हमें रेडिएशन डोज मिलता है। रेडोन एंड इट्स डीके प्रोडक्ट, जो रेडोन जो गैस है उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा मिलता है हमें, और उसके डीके प्रोडक्ट तो उसमें 1.2 मिलता है। टोटल एवरेज जो यूनिवर्स वर्ल्ड का है वो 2.4 है। नाउ जो ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा जो जो प्लेस है सबसे ज़्यादा जहाँ पर डोज मिलता है वहाँ 24.5 मिलता है, उसका बुरा परिणाम है मोनाजाइट सेंट की वजह से मिलता है। चाइना में 3.2 मिलता है मैक्सिमम डोज, इंडिया में 15.7 है, केरला में, बाकी जगह पे बहुत कम भी है, 2 के आसपास ही है नियरली। एंड ईरान में हमें ये मिलता है 7 to 35 की रेंज में। इटली में 4.9 का रहता है मैक्सिमम डोज कंट्री के पर्टिकुलर प्लेस पे और जो टाउन है उसमें। नाउ मिल्क प्रोडक्ट्स जो हमें मिलता है वो ये जो रेंज है वो U238 नेचुरल आइसोटोप है, पोलोनियम भी नेचुरल आइसोटोप है, और इन दोनों नेचुरल आइसोटोप से हमें मिल्क प्रोडक्ट में दोनों एग्जिस्ट करते हैं।
तो 17 मिली बैकरल पर केजी हमें इसमें मिलता है। इसी तरह जो दूसरे फ्रूट्स वगैरह लेते हैं उन सब में एक रेंज होता है, नेचुरल आइसोटोप उसमें एग्जिस्ट करते हैं, वो जो हमें इंटरनल डोज देते हैं। नाउ जो हमें डोज मिलती है, जो यहाँ पे अगर हम ये जो ये वाला पॉइंट है, लिमिट फॉर द पब्लिक के लिमिट, मतलब ये आईफल टावर से हमने इसे कंपेयर किया है कि हमें कितना सब कुछ ये डोज मिलता है। तो जो हमें रेड कलर का इसमें दिखाई दे रहा है, हमें ये जो पोर्शन है ये पब्लिक के लिए बहुत स्मॉल है, मतलब आईफल टावर का अगर हम टॉप पे, चलो हम पहले ऊपर चले जाते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग डोज, मतलब इतना डोज अगर मिलेगा ना तब जाके हमें लाइफ थ्रेटनिंग का ये लाइफ थ्रेटनिंग होगा। और उससे जो कम है, जो हमारे पास ये है रेडिएशन इलनेस पासिंग सिम्टम, मतलब यहाँ पर हमें रेडिएशन इतना अगर डोज मिलता है तब हमें सिम्टम शुरू होता है। फिर तीसरा है नो सिम्टम, यहाँ पर हमें कोई सिम्टम नहीं मिलता, मतलब आईफल टावर का जो नीचे वाला बेस है वहाँ तक नो डिटेक्टेबल इफेक्ट। कहाँ तक, ये हमारी जो बिल्डिंग है, मतलब इस बिल्डिंग तक का डोज। तो हमें जो ऑक्यूपेशनल पर्सन को जो मिलता है वो 2 मीटर तक का ही मिलता है, यूँ कह सकते हैं। आईफल टावर से अगर कंपेयर करें तो हमें 2 मीटर की हाइट तक का ही रेशो में हमें डोज मिलता है, और पब्लिक को उससे कम मिलता है। और डिटेक्टेबल जो है हमारे पास, डिटेक्टेबल जो लिमिट हमें दिखाई दे रहा है ये यहाँ पे हमें नो सिम्टम है और ऊपर वाले पोर्शन में डिटेक्टेबल। तो कहने का मतलब जो हमें डोज मिलती है वो बहुत कम मिलती है। ऑक्यूपेशनल पर्सन जो जैसे एटॉमिक एनर्जी या दूसरे किसी आईआई या वर्ल्ड के किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं जहाँ पर उनको रेडिएशन में वर्क कर रहे हैं, गामा और एक्सरे में, तो उनका जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। कहने का मतलब है कि ऑक्यूपेशनल पर्सन को भी डोज बहुत कम मिलती है। तो रेडिएशन से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेडिएशन का बहुत ज़्यादा डोज मिलने पे ही हमें इस सिम्टम को हम उसको मेज़र कर सकते हैं। और इस चार्ट में आपको दिखा रखा है कि ये किसी भी रेडिएशन डू रेडियो एक्टिव मटेरियल रिमेन रेडियो एक्टिव फॉर एवर, तो इट्स डिपेंड अपॉन द हाफ लाइफ ऑफ द मटेरियल। ओके, नाउ